Punjabi Hindu. I have been asking him, I have been curious to ask him what does he want to do with this? Why does he want to bring this to the fore? Why does he want to write a book and then take it aggressively the way he's taking it? मुझे राम जी को सेलिब्रेट करना है, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ बनाई जा रही है मैं उस चीज़ पे पक्ष में नहीं। 1984-85 and then if you look at the casualties during militancy, they are almost equally divided between Hindus and Sikhs. किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा जो कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा है कि उसने एक साझा पंजाबियत के सूत्र को दोबारा से दृढ़ किया है। नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गैदर्ड हियर। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों को महसूस ही नहीं होता है सिवाय इस कम्युनिटी के कि वो एक जरूरी मुद्दा भी है या उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब और पंजाबी के बारे में स्पेशली आउटसाइड I would say even outside Delhi, एक धारणा है that these are people who are well off, they speak loudly, they can get their voice heard और बहुत मजबूती से अपनी बात रख देते हैं and they hold no punches। कुछ हद तक हो सकता है ये बात सही भी हो, लेकिन इसी सब के बीच में विनायक दत्त जो हमारे साथी भी हैं, इन्होंने एक पर्सपेक्टिव सामने रखा है, एक दृष्टिकोण इनका भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण लगता है। एंड बिहाइंड दैट अग्रेशन, दैट कॉन्फिडेंस, दैट suave attitude, can do attitude, he highlights a perspective of a Punjabi Hindu। ये पर्सपेक्टिव क्या है, इसको जानना जरूरी क्यों है? विनायक ने जब इस किताब के बारे में बताया, this book has been out for a while, there are some chapters here that are absolutely fascinating, जो कि आम तौर से लोगों को समझ में ही नहीं आता है। आज उसी को समझने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। मंच पर खुद विनायक दत्त हैं। विनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत। We are more than happy at TheRedMike to have partnered with you to get this conversation going। हमारे साथ मनीष तिवारी जी भी हैं, सांसद हैं आनंदपुर साहिब से। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे कुछ ही देर में और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि विनायक, पंजाब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पंजाबी हिंदू, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको ये किताब लिखने की जरूरत महसूस क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई? मैं संकेत जी, क्योंकि थोड़ी देर पत्रकार भी था, तो ये मेरा मानना है कि अभी क्योंकि हिंदुत्व का माहौल है काफ़ी, अब एक ब्रांड ऑफ हिंदुत्व है जिसे कहा जा रहा है कि सिर्फ वही हिंदू है। आई एम अ प्राउड हिंदू, बट आई डू नॉट बिलीव इन दैट ब्रांड ऑफ हिंदुत्व। आई फर्मली बिलीव दैट ओरिजिनल हिंदू ही पंजाबी हिंदू है। आई हैव अ लॉजिक के वेद रावी के किनारे लिखे गए, जो कि पंजाब की सरजमी थी। रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी, जिसे हम ओरिजिनल टेक्स्ट मानते हैं, वो एक जगह है राम तीरथ, अमृतसर से तकरीबन 37 किलोमीटर दूर है, वहाँ लिखी गई, जो कि पंजाब में है। गीता का जो उपदेश हुआ वो कुरुक्षेत्र की धरती पे हुआ, विच इज़ ऑल्सो अ पंजाब, जो कि पंजाब में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है उसमें मेरा बिलीफ नहीं है। आई डू नॉट बिलीव इन एन एग्रेसिव पॉस्चरिंग हिंदुत्व जो इस टाइम पे माहौल बनाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक किताब लिखने से पहले इस देश में 16-17 सूबे घूम चुका था, तो जो तमिलियन है वो भी सेम ब्रांड ऑफ हिंदुत्व जिसे अब सब पे थोपा जा रहा है, क्योंकि अब ये लाइन ली जा रही है कि सारे हिंदू एक हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जब मैं छोटा था, जब हमें ये पढ़ाया जाता था कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी एथनिक कंट्री, अभी ये बताया जा रहा है कि सब हिंदू एक है। सो तमिलियन हिंदू
मेरा ऐसा मानना है वो अलग है, पंजाबी अलग है, बंगाली अलग है. एंड आई फर्मली बिलीव के जब पंजाब की बात होती है, आई बिलीव इन गुरुद्वारा एंड बट आई एम अ हिंदू. हमारे यहाँ मतलब रीति रिवाजों में ये चीज़ें, ये कल्चर में शामिल है. और जब पंजाब की बात होती है तब सिख आइडेंटिटी की बात होती है. पंजाब एंड सिख्स आर नॉट वन. सिख्स आर सिख्स, पंजाबीज आर पंजाबीज. पंजाबी हिंदूज फॉर्म 38% ऑफ द पॉपुलेशन देयर. 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जब आर्मी की रिक्रूटमेंट की गई थी, उस टाइम पे मुस्लिम्स वर 55% ऑफ द पॉपुलेशन, पंजाबी हिंदूज वर 35 एंड सिख्स वर अराउंड 12 to 13%. 66 आते आते जो पंजाब बचा उसमें सिख्स वर 62, हिंदूज वर 38 एंड 1 or 2% ऑफ द अदर माइनॉरिटीज. सो आई फर्मली बिलीव के जब पंजाब की जब बात होती है तो एक कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है, एक इंडियन पर्सपेक्टिव आता है और एक सिख हार्डलाइन पंथक पर्सपेक्टिव आता है. जो कम्युनिटी जिसने पंजाब को बनाया, जिसने महाराजा रंजीत सिंह का राज एस्टेब्लिश किया, दीवान मोहकम चंद, मिसर दीवान चंद, जिन्होंने मुल्तान जीत के दिया, जिन्होंने कश्मीर जीता, जिन्होंने पेशावर जीता, दीवान मूल राज जिन्होंने अपना परिवार लुटाया, जो मुल्तान को आखिरी मोमेंट तक डिफेंड करते रहे जब लाहौर भी जीत चुके थे अंग्रेज. उसके बाद भी अगर हम आए, हम भगत सिंह को याद रखते हैं लेकिन हम सुखदेव थापर को भूल जाते हैं. हम अगर राइट में चले जाएं तो हम सावरकर को याद रखते हैं लेकिन हम भाई परमानंद को भूल जाते हैं. उसके भी अगर हम आगे चलते हैं तो हम लाला लाजपत राय को याद रख लेते हैं लेकिन हम गोकुल चंद नारंग को भूल जाते हैं. तो मतलब जितने लिबरल थे, एक तो वो किसी के एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए वो बुला दिए. मैं उन पे आके क्लेम कर रहा हूँ कि भाई ये मेरे लोग हैं और मैं उस हिंदुत्व में नहीं बिलीव करता. जी सब नरेश जी भी यहाँ पर हैं. आइए. We would like to welcome Naresh Arora ji. He's a political strategist. अभी आपका latest assignment रहा है. You were the advisor to the Rajasthan government during the elections. वो कारण भी कुछ और होंगे, उन पर एक और विस्तार से चर्चा कर लेंगे. लेकिन he does politically advise and क्या होता है कि राजनीतिक रूप से हार जीत का एक सिलसिला लगा रहता है हर स्ट्रेटेजिस्ट के लिए. He has, to his credit, some great wins also for the Congress Party. Thank you very much for joining us. And he's also a Punjabi Hindu. Thank you, Naresh. And he is my boss. And he has been a mentor and a lightning light. So, just taking the thing forward. आप अपनी बात खत्म कर लें, उसके बाद मनीष जी. मैं बस ज़्यादा बोलने की आदत है तो थोड़ी मैं ख़त्म कर रहा हूँ. तो मेरा ये क्लेम था कि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो जो आइकन्स की मैं बात कर रहा था उनको भुला दिया गया था. तो इस किताब से मेरा पर्पस है कि उन लोगों को री-एस्टैब्लिश किया जाए. और जब पंजाबी सूबा मूवमेंट हुई थी, विच आई फर्मली बिलीव वाज अ कम्युनल मूवमेंट, बिकॉज पंजाबी हिंदू ने 1947 की डिवीजन देखी थी. वो उस टाइम पे मेंटली फिजिकली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि पंजाब के और मतलब जैसे टुकड़े किए जाएं. आज की डेट में जब फार्मर एजिटेशन को एक तरीके से पंजाब में सेलिब्रेट किया जा रहा है तो पंथक ग्रुप्स इन जो सेक्शन है इंटेलिजेंसिया का, उसमें भी है कि यार क्यों ना हरियाणा को शामिल करवा लिया जाए. तो दे आर कमिंग लेट टू द पार्टी. तो भाई अगर शामिल ही करवाना था, अगर आप यू आर फर्मली बिलीविंग इन दैट ब्रदरहुड नाउ, देन व्हाई डिड यू डिवाइड दैट स्टेट बिफोर. तो जो ये कन्फ्यूजन है ये इसीलिए है बिकॉज पंजाबी हिंदू ने कभी खुद को असर्ट नहीं किया. वी हैव बीन मार्जिनलाइज पोलिटिकली, वी हैव बीन मार्जिनलाइज इकोनॉमिकली. एक गलती हम पंजाबी हिंदू की है कि पैसे कमाने को थोड़ी सी ज़्यादा तरजीह देते हैं. इनको लगता है कि पंजाबी अगर हम पैसा कमा लेंगे तो हम बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे. वो होता नहीं, और उसी में हम कॉर्नर होते जा रहे हैं. जी मनीष तिवारी जी जो हैं वो सांसद हैं अनंतपुर साहिब से. इट इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट तख्त फॉर द सिख्स एंड येट जो सांसद है वहां से वो एक पंजाबी हिंदू हैं. मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो विनायक ने ये सब बोला, क्या आपको लगता है ये मैटर भी करता है? बिकॉज अगर मैटर करता तो फिर ये अपने आप में एक, मैं क्या समझूं, मतलब बीइंग अ पंजाबी हिंदू, बीइंग एन एमपी फ्रॉम अनंतपुर साहिब, देन दिस वुड नॉट हैव हैपेंड अगर इतना ही स्ट्रांग वो फीलिंग होती. Thank you very much, Sanket. First of all, allow me to congratulate Mr. Vinayak Nath for
taking the trouble of writing this book. It's a perspective, and I read the book with great interest. Of course, there are large parts of the book that I do not agree with, but that's a separate issue altogether. No, I think what Vinayak has done is that he's raised a very fundamental question. Is there an identity called the Punjabi Hindu? I think that's the fundamental question that Vinayak has been trying to raise through this book. And in my respectful submission, there is no separate identity called a Punjabi Hindu. And the reason why I say that is because the ethos of Punjab is essentially summed up by three words. It is Punjab, Punjabi, and Punjabiyat. And within that rubric of Punjab, Punjabi, and Punjabiyat get subsumed the various ethnic identities that inhabit Punjab. And the reason why I say that is because you made a reference to my constituency, Sri Anandpur Sahib, the place where the Khalsa Panth was consecrated by Sri Guru Gobind Singh Ji on the 13th of April 1699. And so therefore, if there would have been such hardline divisions in Punjab, there is no way that somebody who doesn't wear a turban, notwithstanding the fact that my mother was a Jat Sikh, should have been representing Sri Anandpur Sahib. So the fact remains that the Punjabi identity is a very syncretic identity. And irrespective of efforts which have been made across centuries to try and divide this entity, that effort has been unsuccessful. You see, in a very expansive sense of the word, the tragedy of Punjab actually, in some senses of the word, mirrors the tragedy of Afghanistan. And the reason why I say this is because when you look at Punjab, till 1901, Punjab extended from Delhi right up till the Khyber Pass. The first division of Punjab took place in 1901 when the northwest frontier of Punjab was actually carved out into a separate province called the Northwest Frontier Provinces. That was actually the first division of Punjab, which happened at the turn of the 20th millennium. And then in 1947 was the second division of Punjab when the partition took place. And one of the very neglected aspects of why there was such a huge bloodbath, because the partition of India was not the partition of India. It was essentially the partition of two provinces of India, Punjab and Bengal. The partition of Bengal, thankfully, was much less bloody than the partition of Punjab. And one of the reasons why things panned out so badly in Punjab for Hindus, Sikhs, Muslims, who constituted this syncretic culture of Punjab, was because at the end of the Second World War, there was huge demobilization which took place from the British Indian Army. And by 1945, the British Indian Army had grown to about 2.9 million people. About 2 million people in that army were from between Delhi and the Northwest Frontier Provinces. And when these demobilized soldiers went back, they were allowed to take their weapons, as was the tradition at that point in time. So this was a hugely militarized region because, after the First War of Independence in 1857, when the British changed the recruiting patterns,
In any case, this area had become heavily militarized because there was a lot of recruitment. And through an area which was flush with weapons, the British decided to draw a line. And obviously, when you have in every household every conceivable weapon available, the consequences are for us to see. And then, of course, there was the 3rd Division of Punjab in 1966, when Punjab was trifurcated into Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh, with the status of Chandigarh still outstanding 50 years down the line. So, therefore, despite these tragedies, the effort to try and divide Punjab along communal lines, and despite the effort of Pakistan, which after the 1971 debacle, when Bangladesh was brought into existence, decided to bleed India with 1,000 cuts, they have not been successful. And that is why Punjab, like Bengal, is perhaps the only state from where a Punjabi can go and fight an election from any constituency. So unlike an Uttar Pradesh or a Bihar or some other parts of the country where caste divisions are very, very strong and very tight, fortunately in Punjab that does not exist so far. And therefore, without any offense to Vinayak, what I am trying to submit is that a separate ethnic identity, beyond the Punjabi identity, called the Punjabi Hindu, in my respectful submission, does not exist. Oh, okay. Whether this representation which Vinayak is talking about can be a political force, और नरेश जी, क्योंकि आप एक political strategist हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अपनी identity के बारे में बात करना, जैसे विनायक बात कर रहे हैं, should it necessarily be construed as divisive or even communal? आप peaceful हो सकते हैं and yet you want to be seen as representative of a group. और अगर आप वो ग्रुप की तरह रहेंगे तो फिर there are chances that you may be politically hurt. मनीष जी का ये मानना है कि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी आप you're being politically hurt. Thank you, Sanket and Vinayak, first of all, for inviting. Before I dwell on the question which you have raised, I would want to see a few lines about the book and the author. Because as he's already introduced me as his boss, which I don't consider myself, I consider him as a colleague of mine and a very valued colleague. When he conceived the idea of this book, he came to me and he said that I want a break. And I said, why do you want a break? Because he's a very passionate individual. Few of the rare individuals who are cause driven. He's not driven by money. So I asked, is there any issue, etc., because the work that we do is already full of challenges. So I never thought that he's not having the drive to address any challenge. So he said, no, I want to write a book. So as a curious mind, I asked what the book is going to be about. So then he told me that the book is going to be something very radical. But he didn't reveal that what the book is going to be about. So then eventually he did write the book, but he wrote the book while working. He never took a sabbatical. He never took a break. I don't know when he wrote this book, because as I am not a very great reader of books, because I don't have the patience to read books. So to write a book is another feat for which I want to congratulate him first. And as Manish ji himself is here, he's read the book because he's himself a very able writer. He's penned down such intricate books and such on trivial issues. So he would be a better judge on the quality and the writing part as well, alongside having the political opinions and the opinions that he expressed. So now coming to the question which Sanket has raised, according to me, raising the issue of ethnicity is never a bad idea, especially in a country as diverse as we are.
which in my opinion is very, very difficult to exist first of all, and then to thrive the way we have thrived. And Punjab has been a very integral part of it, of our country, and Punjab's culture, Punjab's history, Punjab's contributions have been glorified and have been. We are very proud of it, as all Punjabis are. Vinayak's thoughts on the identity of a Punjabi Hindu. I have been asking him. I have been curious to ask him what does he want to do with this? Why does he want to bring this to the fore? Why does he want to write a book and then take it aggressively the way he's taking? His thoughts to me have been that he wants to stir a debate about something which he thinks is a forgotten subject. It's not spoken about these days, especially after the cruel days of terrorism that Punjab has seen. Some people who, like us and Manish ji, has been a victim of those days. That how this communal line, communal divisiveness, communal agendas are forbidden in Punjab. It's very rare that this conversation comes up. The reason for that, according to me, as I agree very rarely with Vinayak, is that the Punjabi Hindus have accepted it. That yes, we are the ones who are not the rulers anymore. Despite of whatever contributions they have had in the history of Punjab, they have accepted it. And as you see, the elections in Punjab also see the Punjabi Hindus voting for the parties or the combinations where they feel protected. So this, I think, and because there has not been a census for a long, long time, so we are not very sure about the numbers and the percentage of the turbaned and the non-turbaned Hindus, so to say. But I don't think so that they are in minority. And even if they are in numbers, the contribution, the division of work makes them an integral part of the Punjab and Punjabiyat. So stirring up a debate about that how a Hindu or a non-turbaned Punjabi needs to be seen, valued, accounted for, whether in politics, whether in social life, whether in industry or wherever. This debate, I don't think so, is very unhealthy. It should happen. Okay. ये इंटरेस्टिंग इसलिए है मनीष जी क्योंकि आपने बोला कि ये फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड आपके वक्तव्य से कि ये कोई एक सेपरेट आइडेंटिटी या इसके अराउंड कॉन्वर्सेशन शायद वो उतना पंजाब की आइडेंटिटी को मैटर नहीं करता है, वो सब घुला मिला है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्टेट. बट विनायक ने अभी अपने शुरुआती वक्तव्य में एक चीज बोली, उसने बोला पंजाबी हिंदू की आइडेंटिटी जिस तरीके का ब्रांड ऑफ हिंदुत्व अभी प्रस्तुत किया जा रहा है उससे अलग है. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? You know, Sanket, when I said that in many senses of the word, the tragedy of Punjab actually mirrors the tragedy of Afghanistan, let me try and explain what I was trying to convey. You see, from 1000 AD till 1707, Punjab was invaded almost 70 times. And every invader came through Afghanistan, or some of them came from Afghanistan also. They came down the Khyber Pass, and they came all the way up to Delhi, traversing the Punjab. And obviously there was loot, there was pillage, there was rape, there was plunder. And that gave rise to a very peculiar resource, which can be summed up in one sentence. There's a proverb in Punjab, कि खादा पीता लाहेदा और बाकी अहमद शाहेदा. That whatever you eat and drink is yours, the rest Ahmed Shah Abdali will take away. And so that instilled a very peculiar kind of fatalism in people who inhabited this land all the way from the Khyber Pass till Delhi. And they were Hindus till the time the Sikh faith came into existence.
and then there were Hindus and Sikhs. And when the partition of India took place in 1947, the Hindus and Sikhs found themselves on the same side of the divide. So because it was a partition on religious lines, India was partitioned into a Hindu India and a Muslim Pakistan. The Hindus and the Sikhs actually found themselves on the same side of that fault line. And the massacres which took place, there was no discrimination whether you were turbaned or you were unturbaned. The only question was that whether you were a Muslim or you were not a Muslim, right? So therefore, that's how things really panned out from 1947 onwards, and that gave rise to another saying in Punjab, कि Hindu और Sikh da no मास दा साथ है. You are like the nails in the skin, right? So therefore, you are so intertwined by tradition, customs, marriage, and till not many decades ago, the elder son in every Hindu family would become a Sikh. So therefore, that kind of a division, which you essentially find in between other faiths, really never existed between a Punjabi Hindu and a Sikh. And that is why when I referred to the Multan Conference of 1972, where after the creation of Bangladesh, two critical decisions were taken by Pakistan. One, to develop a nuclear bomb, and two, to bleed India with 1,000 cuts. And despite unleashing communal violence in Punjab between 1980 and 1995, the beauty is that there was not a single communal right in Punjab. Despite the best efforts of Pakistan, there was no communal right in Punjab, notwithstanding a very tense decade and a half. So under those circumstances, what Naresh says is correct. You see, assertion of identity or ethnicity is something that we are seeing across the world, right? Even in Punjab, there is an assertion of a Dalit identity, right? There is an assertion of other forms of identities. But from a purely national security perspective also, a division between the Hindu and the Sikh in Punjab would be very, very deleterious to national security. And that is why this syncretism, this bond between the Hindus and the Sikhs is the biggest national security guarantee that you have on India's western frontier. And that's why, without taking away from the effort that Vinayak has made, and he's made a tremendous effort in trying to document the history of Punjab. When I was reading that book, this book, I asked myself a question, that if a Sikh would have written this book, would it have been any different? And the answer was no. That even if, let us suppose, rather than Vinayak Dutt, it would have been Vinayak Singh, the narration, whether I agree with it or not, would have been by and large the same. So therefore, to conclude, in my estimation, I don't think that this ethnic division in Punjab either exists, and B, if this cleavage ever comes about, and God forbid it doesn't come about, it would be very deleterious to our national security. मैं एक बार फिर से अपना एक सवाल और जो उसका बिंदु था वो दोहराना चाहता हूँ मनीष जी, वो ये है कि विनायक कहते हैं कि ये अभी का जो ब्रांड ऑफ हिंदुत्व है पंजाबी हिंदू उससे अलग है, इस पर आपकी क्या राय है? Look, if your question is that the Hindu in the rest of the country is communal and the Punjabi Hindu is different, well, I would not agree with that thesis at all. I don't think intrinsically anybody is communal or secular, right? The people are swayed at times by events and circumstances and different trends. But yes,
the Punjabi Hindu is different in that sense of the word, that because, as I was earlier pointing out, the syncretism inherent or intrinsic to Punjab, which is summed up in 3 words, Punjab, Punjabi, and Punjabiyat, and the ethos of no mas the saas between the Sikh and the Hindu and Punjab, makes him a different entity or a different kettle of fish altogether. Okay. मैं मंच पर अभी आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर सुमेल सिंह सिद्धू, आपका स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हिस्टोरियन हैं, प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, पंजाब पर बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट पर खास तौर से एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण वो आप ला सकते हैं। डॉक्टर सिद्धू, पहले तो मैं चाहूँगा अगर आप एक ओपनिंग कमेंट दे दें हम लोगों को। जी, मैं सबसे पहले तो माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं लेट आया हूँ और डिस्कशन काफ़ी आगे चल चुकी थी, और वो बताना इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब के सबसे बड़े स्कॉलर या सारे हिंदुस्तान के प्रोफेसर JPS ओबरॉय कल वो गुज़र गए और आज उनका क्रिमेशन थी। मैं वहाँ पे, मुझे और 2 ही बजे का टाइम था, मुझे वहाँ पे होके आना था। एक पूरी जनरेशन को, बल्कि 2 जनरेशन को उन्होंने ये चीज़ें हिंदुस्तान और पंजाब और ये सारे रिलीजन्स को साथ में कैसे देख सकते हैं। तो उसमें जो बात मनीष जी कह रहे थे कि उससे जोड़ते हुए मैं प्रोफेसर ओबरॉय के रेफरेंस लेके मैं अपनी एक बात को कहता हूँ कि पंजाब के साथ स्कॉलरशिप में जो सलूक किया जाता है वो ये है कि एक तो पंजाब को या तो एक ज्योग्राफिकल और एक पॉलिटिकल एंटिटी मान के शुरू से करते हुए इसकी एक प्लॉट कर दी जाती है जर्नी, या फिर जब इसको अलग अलग पढ़ा जाता है तो सिख्स ऑफ द पंजाब, हिंदूज ऑफ द पंजाब, मुस्लिम्स ऑफ द पंजाब। तो ये बात हो गई कि एक पंजाब है और एक मुस्लिम या हिंदू या सिख हैं, और अब इनके बीच का आप कुछ बनाते जाइए। तो पंजाब क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, ये एक डिबेट मुझे लगता है कि मिसलीडिंग डिबेट रही है, और ये इस बात से सफ़र करती है कि आप बंगाल की बात करिए या महाराष्ट्र की बात करिए तो हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं, लेकिन वहाँ पे बंगाली एक लिहाज से प्रीफिक्स भी आता है, बंगाली मुस्लिम्स, या महाराष्ट्र जो हम मराठी परंपरा जिसे हम कहते हैं, है तो वो हिंदुइज्म ही। क्या उसको हिंदू कहना ज़रूरी लगता है वहाँ पे? उसके अंदर का जो एक महाराष्ट्रियन एलिमेंट है वो हावी है एक लिहाज से, वो उसने किस तरह से अपने रीजन के और सिविलाइजेशनल इथॉस में से उसको मीडिएट किया है। पंजाब के अंदर जो सवाल पूछना चाहिए, और मुझे लगता है कि विनायक की ये जो किताब है इसके पीछे एक प्रेरणा किसान आंदोलन की है, कि उस किसान आंदोलन ने ये जो अलग अलग एक सेक्टेरियन बिसात से जो पंजाब को अभी तक देखा जाता था मीडिया में, स्कॉलरशिप में और पंजाब के बाहर की बातचीत में, और एक हद तक पंजाब के अंदर की बातचीत में भी, किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा जो कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा है कि उसने एक साझा पंजाबियत के सूत्र को दोबारा से दृढ़ किया है, और उसमें से बहुत सारी एनर्जीज जो अनलीश हुई हैं, उसने सिख मूवमेंट के ऊपर क्या असर डाला है। ये उतनी बड़ी मूवमेंट थी जो कि 1984 का जो सारी बिसात है उसके पैरेलल, बल्कि उसको काउंटर करते हुए पंजाब ने एक साझी बात को खड़ा किया, बाकी सारे हिंदुस्तान ने उसका साथ दिया। ये बातों को अलग अलग मैं एंटेगनिज्म में नहीं देख रहा हूं, पहली बात। और उसमें से विनायक ने जो पहल की है और बहुत हौसले वाला काम किया है, मैं ये समझता हूं एक बहुत ज़रूरी डिबेट को उन्होंने हमारे सामने रखा है कि अब ज़रा पंजाबी हिंदुओं के बारे में बात की जाए। मुझे लगता है, और मनीष जी जिस तरह से इशारा कर रहे थे, कि अगर ये विनायक सिंह भी होते, विनायक मोहम्मद भी हो सकते हैं, तो भी पंजाबी जब सामने आ जाता है तो फिर ये हिंदू मुसलमान सिख खुद ब खुद एक शय बनने लगते हैं। मैं बस यहाँ पे, मुझे ये नहीं पता मुझे कितने समय में अपनी बात कहनी है। अच्छा, हिस्टोरियन है हम थोड़ा सदियों में चलते हैं तो एक दिक्कत है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
कि पंजाब के अंदर जो हिंदुओं का क्वेश्चन है वो सिर्फ डेमोग्राफी का सवाल नहीं है। हम लोग आजकल इस तरह से देखने के बहुत आदी हो चुके हैं। पंजाबी, मैं ये मानता हूँ, मैं इसके ऊपर लंबी बात भी हो सकती है, लिखा पढ़ी मेरी इसी के ऊपर है कि क्या कोई पंजाबी सिविलाइजेशनल जोन है। रोमिला थापर कहती हैं कि है। ये अफगानिस्तान से लेके नीचे सिंध तक जाता है। और डीएल शेठ जो बड़े एमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हुए हैं और गुजरात के हैं, वो ये कहते हैं कि खुद गुजरात जो है ये पंजाबी सिविलाइजेशनल जोन का हिस्सा है। और इसके अंदर सारा पाकिस्तान ऑलमोस्ट आ जाता है, और इधर का पंजाब, हरियाणा और ये नीचे तक आप राजस्थान, राजपूताना और गुजरात को अगर ले लें। मैं टेरिटरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी अलग पॉलिटिकल एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम उसके बीच में जाएं तो कुछ ऐसा है जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। मैं उसकी डिटेल में जा सकता हूँ। सिंधी सूफी जिस तरह से गुरु नानक को रिस्पॉन्ड करते हैं, सचल सरमस्त, और जो उनके सबसे बड़े हुए शाह अब्दुल लतीफ़, उनके अंदर गुरु नानक साहब की जो इंटरप्रिटेशन है, जिस तरह से उनके अंदर वो रचे हुए हैं, और वो इस हद तक है कि सचल सरमस्त लेट 18th सेंचुरी तक वो रहते हैं, और उनके जो शागिर्द हैं उनका नाम यूसुफ नानक रखा जाता है। तो एक तो आप जरा इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि ये इस तरह से कनेक्टेड है। दूसरी बात, अगर आप सूफियों को, पंजाब वालों को देख लें तो उसके अंदर कृष्ण और अयोध्या और सिखी के जो कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर बाकायदा उसको इस्लाम के साथ या एक सूफियत के अंदर उसको कैसे इंटेग्रेट किया गया है कि ये सब साझा है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, निर्गुण भक्त हैं और सिख गुरु हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उसके अंदर सबों की कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी आपको मिलती है, इस्लाम की भी, हिंदुइज्म की भी, सिखों की तो कोई अलग से बनी नहीं है, इसी में से ही डिराइव्ड है। मतलब आप इतना बोल लीजिए कि मुझे देवी के दर्शन हो गए, उधर महबूब का दीदार होता है। तो पंजाब और सिखी में दोनों चलते हैं कि जिन गुरुधामों से सिखों को विछोड़ा गया है उनके दर्शन दीदार की हमें सकत दीजिए। तो ये दोनों जो चीजें हैं, कर्ता करीम और राम और रहीम, ये गुरु गोबिंद सिंह का जोर लगा हुआ है इनको एक साथ रखने में। और जो निर्गुण पंजाबी भक्त हुए 19th सेंचुरी तक, उससे भी देर तक, उनकी टर्मिनोलॉजी में इस्लाम के कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी आपको इतनी बड़ी मात्रा में मिलती है, विच इज द लीस्ट स्टडीड एरिया। और सिखों की तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हम इनको 3 कम्युनिटीज मान लें तो उनके जो लीडिंग थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके अंदर तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट है कि हम सब साथ हैं, एक हैं। और अगर वो हैं तो इसका मतलब है कि पंजाब की कोई एक ऐसी यूनिफाइड एक आइडेंटिटी के ऊपर काम चल रहा था। महाराजा रणजीत सिंह के राज में आपको और विनायक ने वो एक, मुझे लगता है कि इस किताब की एक डिस्टिंक्शन है कि अक्सर जो हिस्टोरियोग्राफी या सोशल एनालिसिस जो 19th सेंचुरी पंजाब का किया जाता है और उसमें जब आर्य समाज का जिक्र आता है तो लगता ये है कि जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले पंजाब का हिंदू इनविजिबल था, वो था ही नहीं। एज इफ with the advent of Swami Dayanand Saraswati and Satyarth Prakash and the multifaceted arguments that he had, that Punjabi Hindu got into prominence only after his intervention, which I think this book very clearly rebuts. Diwan Amarnath, Diwan Mulraj Chopra, Governor of Multan, Khushal Singh, people from और कितने ऐसे लोग हैं जो आर्मी के कमांडर्स थे, जो स्टेट्स के गवर्नर थे, जो उसके फॉरेन मिनिस्टर थे, एंड दे रिमेन्ड लॉयल इवन आफ्टर रणजीत सिंह वाज नो मोर द किंग एंड द किंगडम हैड बीन टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश एनेक्सेशन। उसके बाद भी वो लोग कैसे रहे, इन सब का जिक्र अदरवाइज गायब है, एज इफ दे डिडंट मैटर। मेरा ये कहना है कि ये जो एक कॉन्टिन्यूटी थी, इसको हमने एक सर्टन मॉडर्न और सोशल रिफॉर्म के चलते और ब्रिटिश के आने के बाद हमने इसको जिस तरह से इकट्ठा करना शुरू किया, और आर्य समाज ने 2-3 चीजों के ऊपर विशिएट किया पंजाब के सारे माहौल को। एक तो लैंग्वेज के सवाल के ऊपर,
जहां से कि मैं समझता हूं कि ये सारा मसला खड़ा होता है कि हिंदुओं की भाषा हिंदी होगी, पंजाबी नहीं। मुसलमानों की भाषा उर्दू होगी और पंजाबी सिखों की रह दी गई, छोड़ दी गई। और ये किया गया कि पंजाबी एक बहुत बैकवर्ड लैंग्वेज है, किसानों की है, देहात की है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं की जा सकती है। और आर्य समाज ने इस बात को इस लेवल तक दृढ़ करवाया। ये एक इतना बड़ा कल्चरल आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था जिसने एलियनेशन को बोया पंजाब में, और उसके फल हमने 1940s, मैं बहुत ही जल्दी मैं कर रहा हूं, तो हमने इसको देखा कि ये कॉन्फ्लेट हो गया जब ये सारा कुछ, तो हम 1947 की तरफ आते हैं। उसके बाद ये हो गया कि अब जरा हरियाणा भी बनाया जाए एक, और दोस्त लोग कहते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, कि हरियाणा का बनना was a completion, a certain consummation of the आर्य समाजी प्रोजेक्ट, के एक उसकी छवि में एक ऐसा लैंडमास, एक ऐसा वायबल टेरिटोरियल यूनिट खड़ा हो जहां पे के आर्य समाज की वैल्यूज को एक सोशल रियलिटी में लाया जा सके। और जो हिंदू पंजाब के अंदर रह गए, फॉर द फर्स्ट टाइम in history of Punjab, Sikhs were a demographic majority. उससे पहले सिख कभी भी पंजाब के अंदर मेजॉरिटी नहीं थे। और इस सवाल को हम लोग जब डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल फ्रेंचाइज की सेंस में देखते हैं तो बड़े अलग से रिजल्ट निकलते हैं, और वो हिस्ट्री के लेसन्स को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास पंजाब की कोई वैसी हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और 19th सेंचुरी के अंदर क्या हो रहा था, वी हैवंट एग्जैक्टली पुट आवर फोकस टू इट। तो उसके चलते जो बाद के हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि ये डोमिनेंट हो गए, वो ऐसे हो गए, कोई दब गया, मुझे ये लगता है कि ये सब सच होते हुए भी इसके रीजंस एलियनेशन के लिंग्विस्टिक कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं। और वहां से चीजों को अगर उठाया जाए दोबारा से, मैं उसकी एक मिसाल आपको इतनी सी दे देता हूं कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तो हरियाणा के किसानों ने जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया, और एक बात जो उनमें से उठ के आई कि हमें आर्य समाज ने अलग किया है। ये इसकी रिपोर्टिंग कम हुई है लेकिन इसकी चीजें हैं कि आर्य समाज ने ये, मतलब वो जाट की सेंस में बोल रहे थे, किसानों की सेंस में बोल रहे थे कि इसने हमें अलग किया है, हैं हम एक ही। और कन्वर्जन्स होना शुरू हुई सिखिज्म की तरफ, छोटी हुई, ज्यादा हुई, बड़ी हुई, मैं वो बात नहीं, मैं उसके किसी क्वांटिटी में नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे एक कल्चरल जो बिगिनिंग्स होती हैं वो कुछ एक खास माहौल के अंदर ही वो आती हैं। तो ऐसा क्या था, और मैं यहाँ पे आपको आर्य समाज की एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बहुत विस्तार में ये बात समझाई, और इसी से जुड़ी हुई मुझे मनीष तिवारी जी की वो बात याद है, द वर्ड दैट यू यूज, सिंक्रियाटिक रिलेशनशिप, और वो देखने को मिलता है। लेकिन उस सिंक्रोनाइजेशन के साथ साथ नरेश जी, क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि आइडेंटिटी के बारे में भी बात की जाए? क्योंकि जब हम देखते हैं कि 1984 के संदर्भ में गेटिंग और डिलीवरिंग जस्टिस टू द सिख्स, उसको लेकर के बातचीत होती है, उसके साथ साथ ये बात शायद उतने प्रबल तरीके से नहीं हो रही है that during the militancy days पंजाबी 37,000 डेथ्स हैपेंड। ये विनायक नहीं मुझे बताया, ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियली क्या होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतनी डेथ्स यहाँ पे भी हुई हैं, जिसमें बहुत केसेस में, या मैं मानता हूँ क्यों विनायक, लगभग सभी केसेस में उस तरीके से क्लोजर नहीं आया है। पहले एक बार विनायक से इस बात को जान लें, फिर नरेश जी का इंटरवेंशन। विनायक। संकेत साहब, बात ये है, यहाँ सब स्कॉलर हैं, सब बहुत शराफत वाली बात कर रहे हैं, और आज की डेट में शराफत की पॉलिटिक्स है नहीं, ना शराफत की पॉलिटिक्स इन द सेंस ये माहौल है। सिंपल सीधी सी बात है साहब, राम जी मेरे भी उतने ही हैं जितने अयोध्या वालों के हैं। अमृतसर वर्सेस अयोध्या नहीं करते हैं, अमृतसर और अयोध्या मॉडल की बात करते हैं। बाय द वे अयोध्या इतना होता है, हाँ, इसीलिए तो मैंने रेफर किया इसीलिए मैंने रेफर किया। तो किसी की मस्जिद गिरा के मंदिर बनाई जा रही है, कंफ्यूजन इस चीज पे है कि वो उस चीज को सेलिब्रेट करें या ना।
मुझे राम जी को सेलिब्रेट करना है, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ बनाई जा रही है मैं उस चीज़ के पक्ष में नहीं। मेरा सारा आर्ग्यूमेंट जो है वो इसी चीज़ पे है। मैंने पंजाबियत को डिवाइड नहीं किया, इसीलिए मैंने लिखा पंजाबी हिंदू, नॉट अ हिंदू फ्रॉम पंजाब। आई कुड हैव रिटन दैट ऑल्सो। द पॉइंट इज के हमें आज की डेट में रहकर बहुत सारी जो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसका एक एनालिसिस करना बनता है। आप पंजाब की पॉलिटिक्स में देख लेना, मतलब 1997 वाज अ वाटरशेड ईयर कि जब मिलिटेंसी पंजाब में खत्म हो चुकी थी, एक डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट जो कांग्रेस पार्टी की थी, जो हाईली करप्ट थी, जो जा चुकी थी, उस टाइम पे पॉलिटिक्स किसको मिलती है? अकाली दल और बीजेपी को, हिंदू और सिख से। लेकिन जो उसमें पॉलिसी मेकिंग का जामा पहनाया जाता है, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जटवाद, जट जट्ठा, मतलब हमारी पंजाबी में हक, जट हक। आप सब चीजें फ्री करनी स्टार्ट कर दो। सबसे पहले बिजली फ्री हुई, फिर उसके बाद आपके टोल टैक्स चले गए, फिर बाकी टैक्स में आपने डिस्काउंट देने स्टार्ट कर दिए, तो वहां से एक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, विच इज अ फ्री बी पॉलिटिक्स। पंजाबी हिंदू इज अ, जिसे हम दूसरी भाषा में कहें ना, वेरी प्राउड टैक्स पेयर। He doesn't want to take free things and he has never voted for that. But the point is that if you have to counter something which is not ideologically that strong and where you try to balance out different things, you have to fall to something which is freebie driven, and that happened. And after that, the entire politics of our state is in hand of certain sections, right? I'm not asserting myself that I'm a very hardliner Hindu, but by my community is also there. They also want representation in policy making, but they are not getting the fair share. We are not saying that आप हमें चीफ मिनिस्टर बना दो, but आप हमारी बात तो सुनो। आज आप पंजाब की कांग्रेस देख लो, टॉप 10 लीडरशिप में से टॉप 8 देख लेना एक ही कम्युनिटी के, चाहे बाकी चन्नी प्रोजेक्ट जो हाईली डब हुआ, दलित को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो सिर्फ एक कम्युनिटी की जिद की वजह से वो चीज फ्लॉप हुई। मैं उसी पंजाबियत का मुरीद हूं जिसकी बात मनीष सर कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम है इसके, इस शराफत ने हमें इतना कमजोर कर दिया है कि सामने वाले हम पर हावी हो रहे हैं। वहां एक खालिस्तानी एलिमेंट है विच इज वेरी वोकल ऑन सोशल मीडिया, विच इज वेरी वोकल इन मेकिंग द नैरेटिव, और यहाँ पंजाब से बाहर निकलते हैं तो यार ये आ जाते हैं। ये अगर हम कहते हैं चंडीगढ़ हमें 50 साल से मिला नहीं है, आई एम लिविंग इन अ स्टेट, यू आर कॉलिंग मी पावरफुल, बट आई एम पार्ट ऑफ अ स्टेट विच डजंट हैव इट्स ओन स्टेट कैपिटल। I am suffering economically, I am suffering politically. If I raise up my issues, you try to dub me as if I am a separatist. I am not. But the point is कि ये चीजें एड्रेस, पंजाब में किसी इशू का क्लोजर नहीं हुआ पिछले 40 साल से। ना उन 37,000 डेथ्स का हुआ, ना उन फेक एनकाउंटर्स का हुआ जिन सिखों को आतंकवादी बोलकर मार दिया गया, ना 84 का किसी, सब चीज पे पॉलिटिक्स हो रही है, सब चीजें हाफ बेक्ड पड़ी है। वो इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज नोबडी इज ट्राइंग टू टेक अ डिसाइसिव पोजीशन, एवरीबडी इज स्कैर्ड, यार ये चीज कर देंगे तो ये खतरा हो जाएगा। तो वैसे भी तो खतरे में बैठे हो भाई, वैसे ही खत्म होने वाले हो। जिसको आप कह रहे हो ना कि नॉर्थ इंडिया, मनीष जी ने जो पॉइंट किया, जब इस इंडिया की विजुअलाइजेशन की ना, जब डिवीजन हो रही थी, उनको ऐसा ही इंडिया चाहिए था, उन लोगों को ऐसा ही इंडिया चाहिए था, बिकॉज दे न्यू दैट पंजाबीज एंड बंगालीज आर कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली, politically are powerful enough that they will not accept the hegemony of the Hindi Patti politics. And today Hindi Patti politics is asserting themselves, और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, जैसे सुमेर सर ने कहा, जोग्राफिकली एक हो सकते हैं, बट वी आर डिफरेंट पॉलिटिकली, एंड यू cannot have that kind of Hindutva. I do not believe in that Hindutva, but I am a proud Hindu. I need to assert myself कि boss, I am a Hindu, but I am different from you. So I am a Punjabi first, but I am also Hindu. That is only my submission. Naresh. So get 2 points. One which Manish ji has been saying that पंजाब में जो कहावत हो रही है कि भी हिंदुओं ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। I'll give you one example that I have been staying in Gujarat for almost last 20 years, 2 decades now. So whenever in Gujarat particularly, I've been staying in a city called Surat, which is basically now an immigrant city. So we have a large domination of Punjabi population apart from other communities. So whenever you have a conversation with a Gujarati, for example, there, and they ask you where are you from, etc., etc., and then you tell that you are from Punjab, and
you belong to Amritsar and this and that. They finally come up to a question, अच्छा वो सब तो ठीक है, आपकी पगड़ी कहाँ है? And I have been explaining this since last 20 years to people repeatedly. Now, this, in a way, it's very good that the entire country, and this is just an example of Gujarat I'm giving. I've stayed in Karnataka for a long period. There also, when I explained that I'm from Punjab and this and that, acha no, pagdi, turban. So, Punjabis are only seen with turbans. That if he's wearing a turban, he doesn't have to explain he's a Punjabi. As a Arora, I have to tell कि मैं पंजाब में रहता हूँ. मेरे को मैं वहाँ पंजाब में एक शहर अमृतसर का नाम सबने सुना हुआ है क्योंकि वहाँ पे हरमंदिर साहिब है, वहाँ पे वाघा बॉर्डर है, वहाँ चलने वाला बाग है, जो बेसिकली लोग दूर जिनका बहुत पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है उनको मालूम है, वो बताते हैं. बट एज अ नॉन टर्बन पंजाबी आई हैव टू एक्सप्लेन दैट आई एम अ पंजाबी. But with the turban, no one has to explain that Punjabi is assumed to be a Punjabi. When we go abroad, even in Chhattisgarh, I was working in Chhattisgarh, and when you find a turban person, you want to talk to the person in Punjabi, and especially the person who's staying out, he yearns to talk in Punjabi. Those people don't know Punjabi because they've stayed all their life there, they're born there, brought up there, their ancestors. The first impression is, okay, fine, the person is a turban person, he's supposed to have some roots, some connections with Punjab, not with the person who's not turban. I think this is where the debate which Vinayak is trying to bring up or stir up is coming from. Second point, if we see post 92, when democracy returned to Punjab and the elections that have happened, in which the chief ministers have been coming from one particular community. So Congress, by whatever reasons, it came to a circumstantial situation that it was on the verge of making a Hindu a chief minister. When Mr. Chani came up as another alternative, and he became the chief minister. Now, I keep thinking about it, and I've had the conversation with the gentleman who was about to be the chief minister also multiple times, that if it would have happened, how would it have shown Punjab to the world? I bring this point why, when Dr. Manmohan Singh was made the prime minister, or he became the prime minister of our country, it was never said that a Punjabi has become a prime minister. It was always said that Congress has made a Sikh prime minister. So if there was no differentiation there, why does a non-turban person have to keep explaining, no, I also am Punjabi? And when Congress did break the unwritten rule and did make Mr. Chani the chief minister, as Vinayak has just pointed out, the results are there for people to see. And despite of Punjab having the highest population of the community which Mr. Chani represented, the results are here. So this debate, and I in my opening remarks, what I said, that the Punjabis or the Punjabi Hindus have accepted, like India has accepted since 2014, subconsciously, a presidential style of parliament elections. Punjab too, the acceptance has come in. And there is where the politically proactive, thoughtful people, like the author, are trying to stir up the debate that fine. I mean, this book I had not read for the longest period of time. And I had to read it because I had to come here. And without reading, I would not have come here. I would not have been able to come here. And since the time I've read it, I've been thinking on these lines. Not very actively. And I've had some arguments with Vinayak on why you are wanting to do this, why you are wanting to come up in the firing line, etc. But this has provoked my thought as well. And I'm pretty sure whosoever is going to read it, I think the thoughts are going to be on similar lines. मैं मनीष जी के पास वापस आना चाहता हूँ. मनीष जी, from the time we began this discussion to now, the forceful assertion of Vinayak, almost echoing thoughts of Naresh ji, do you feel that there is nothing wrong in raising issues of this identity, और उससे जुड़े हुए जो concerns हैं, जो Vinayak बता रहा है कि वो address नहीं हुए? Look, Sanket, I, with great respect, reject this notion in totality.
And the reason why I say that is that politics cannot be differentiated from the cultural evolution of a state. And the cultural evolution of Punjab post 1947 created that syncretism or created that Punjabi identity, which in my mind, or at least to me, is an indivisible entity and is an indivisible identity. And so therefore, to try and divide this identity, as I was earlier pointing out, is fraught with great national security risk also. Because this is precisely what Pakistan wants. This is precisely the project of bleeding India with 1,000 cuts. Why were Hindus targeted in Punjab initially between 1980 and 1984-85? And then if you look at the casualties during militancy, they are almost equally divided between Hindus and Sikhs. Primarily because the entire effort was to create this divide. And Punjab never allowed that divide to be created. You see, and personally, it affronts me that you choose chief ministers because of their caste or community. I have nothing personal against anybody, but that gentleman Naresh referred to, who was claiming chief ministership in the name of being a Hindu and then later on left and went to another party. With great respect, I asked him then also, what did he ever do for the Hindu community to ask for chief ministership in their name? In fact, he was the worst enemy of Punjabiyat by trying to create this division. Similarly, if there was a rejection of the Congress because there was a Dalit chief minister, I don't think the rejection was because there was a Dalit chief minister. There was a rejection of the Congress party because of Punjab has had this 5-year tradition which was broken by the Akali Dal and the BJP once. And B, there were internal contradictions within the Congress which facilitated the result which came in the March of 2022. So I think there are only a few states which are left in this country where this indivisible ethnicity across communities or indivisible identity across communities still remains. And those paradoxically are the two states which were partitioned by the British as a consequence of the Great Game, Bengal and Punjab. And even if you go to the other side of Punjab, which is in Pakistan, right, there also the Punjabi identity, and I don't want to call it the Punjabi Muslim identity, because they do not like to be referred as such, but the Punjabi identity is equally strong on the other side of the border. So therefore, and I'll just conclude by saying, look, the partition of India never happened in 1947. The partition of India actually happened in the October of 1940. There is a very interesting document, if you ever go to England and have a look at the Churchill papers. In the October of 1940, when the Battle of Britain closes, Winston Churchill proposes a document to the War Cabinet. And that document essentially outlines the partition of India, almost in the same lines as it happened 7 years later. And the reason why he did that was at that point in time, the Soviets were still on the German side, right? And there was the Soviet threat which had sparked off the initial Great Game in Afghanistan. And with a weakened British and the fact that there was a very strong nationalist assertion in India, the British, for their own purposes, required the division of India.
And unfortunately, we became victims of that division. And now, I think the tragedy of Punjab, the real tragedy of Punjab, was not the partition of 1947, but what happened subsequently. And therefore, what is now left of that little zone of syncretism, if we try and splice it and split it, irrespective of the fact that, some people may feel, and rightly so, that, certain communities or certain people who live there do not have enough political representation. But as someone who is a national security scholar, when I look at Punjab and when I look at this debate about ethnicity, it really bothers me, because that is precisely what our hostile neighborhood would want. That would be their dream coming true. ओके लास्ट में अब एक क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं. मनीष जी ने तो अपनी बात कह दी, तो डॉक्टर सिद्धू आपसे शुरू करते हैं. वील कीप इट एट व्हाट 2 मिनट्स ईच, और कितना विनायक बताएं. 2 मिनट्स ईच. डॉक्टर सिद्धू. I think we are basically staring at the fundamental conundrum. Are we looking at Punjab from the vantage point of different and mutually not exactly antagonistic but competing communities? Then it's a different story. Or are we looking at Punjab as a syncretic, shared, and which people do believe in the vision, the idea of Punjab? And if we share that idea, that vision, that history, that consciousness, then how do we look at these communities? Then do they, yes, of course, then within the Sikhs also there can be groups which have been underrepresented, whose claims have not been fulfilled. It can be anywhere else also, in other communities also. So one is this, that we need to kind of look at it, okay, what fundamentally are we trying to have a look. I would only say that Punjab is united by its language. All the communities have a single language, and it has thrived for the last 700 years. The foundation of the cultural civilization of Punjab was laid by Sheikh Farid, Kabir Sahab, and Guru Nanak together. And they came together, and those ideas kind of congealed into one and later on developed. But what we sometimes conflate is, and this might be my last point, that what goes on in the elite circles, earlier in the Arya Samaj, Singh Sabha, Anjuman-e-Islamia, Punjab atmosphere was then kind of conflated as if the whole of the Punjab wants this. Never. It was an elite understanding of the urban professional groups, which later on gained currency through communal press on all the three sides, which created an atmosphere that we cannot live together. But people were united. They had no idea that what is the reason that we are getting partitioned. Similarly, and this is the last line, that even if today, if we look at the share in power within the elite caucuses, and then again conflate it to the whole of Punjab, again I think we'd be making the same mistake that we made earlier in 19th, mid-20th century and now also. और इसमें मुझे ख्याल यही आता है कि मनीष जी के पिता डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, चंडीगढ़ की आप बात कर रहे थे, तो चंडीगढ़ के बारे में यही एक प्रोजेक्ट चलाया गया कि चंडीगढ़ के आसपास सब हिंदी बोलने वाले हैं, ये पंजाब में कैसे हो सकता है. He launched a whole survey on his own. And through the findings of that survey, the facts were for everyone to see that it is actually the Punjabi speakers who are in great majority, and that's why Punjab has a legitimate right to Chandigarh. That he was murdered, assassinated, would remain a crying shame for all of us. And I think people like Balraj Sahni, who championed Punjabi and who actually wrote an appeal to those writers of Punjab who were not writing in Punjabi and in Hindi and English. He actually wrote that we must come and write
in Punjabi. So that's what I'll conclude with, that the linguistic ज़मीन जो है वो साझी है और वहाँ से हमें किसी बात की तरफ आगे जा सकते हैं. Otherwise we'll be caught up in the elitist constructions of Punjab. Okay. Sorry. Thank you. नरेश जी. Sanket, it so has happened that I have been sandwiched between two great scholars. But so I'll take both of their points to conclude mine. That yes, this is one thing which unites Punjab, it's its language, Punjabi. It so unites us that, as he mentioned, Balraj Sahni, who was primitive years, my primitive years, or probably historically a great actor, hailing from Punjab, dominating Bollywood. So there has been a series of, I keep talking about this, that the Bollywood, the Hindi language, our glitter show has been dominated by Punjabis. A bit too much, I would say. And Punjabi Hindus. Punjabi Hindus. From Guru Dutt's and Raj Kapoor's and all those things. Till now. So Punjabi language has not just thrived. Even today when we see that the grand, mega opulent movies being made, Punjabi culture, Punjabi extravaganza, Punjabi words, Punjabi language, all dominates that. Yes, I agree with Manish ji. National security is a first concern and is a no compromise thing, that any kind of debate should not enable any of our state enemies or our nation's enemies to have any kind of benefit out of it. But at the same time, the healthy debate about the identity of non-termed Punjabis, they should not be treated as a quotas. Like I've seen the cabinets being made, the tickets being distributed, the political or I would say the other kind of political interventions when it happens, that okay fine, there is a Hindu ko bhi dena hai, Hindu ko bhi dena chahiye, Hindu ka bhi hona chahiye. Every party tries to do that. They try to term it as social engineering, the words which have been coined lately after Mayawati did some experiments in UP. So that should also not be the case. There has to be a platform where this voice needs to be heard, this voice needs to be discussed, because whosoever, as he was mentioning, that survey came out and the findings of the survey were that there were more Punjabi speaking areas surrounding Chandigarh, laying the claim of Punjab on Chandigarh stronger. Similarly, if there are more honest service within Punjab, the dominance of non-turban or the presence of non-turban, the contribution of non-turban Punjabis will come out to the fore much more. Okay. Manish, would you like to make a closing remark? Look, I think Vinayak has stirred up a debate which unfortunately has too many perspectives and too many nuances to it. But the one thing that he said, which struck me and which I think is most germane, unfortunately, it's not only in Punjab, but if you were to conflate Punjab, the old Punjab, which stretched up to the northwestern frontier province, to Afghanistan, and if you were to consider it as one contiguous conflict zone, there has been no closure in this now going back centuries. So it's not as if the tragedy of Punjab is something which commenced in 1980 or commenced in 1947. Since this was the grand route of every invasion which India experienced through a land route, those closures were too traumatic. And that is why I think successive tragedies got swept under the carpet. In fact, if you there's a project about the oral history of the partition of India, and I think Anita Anand, the historian, was responsible for that. And the one thing which she repeatedly kept saying was that generation which experienced the partition was never ever willing to talk about it. And the reason is not because that the partition was so horrific, but the fact is the partition was a tragedy in continuum of
a multitude of tragedies which encompass centuries that we just learn to surmount it and move on. And therefore, and I think that is the shared pain, the shared grief, the shared tragedy which underpins the syncretism of Punjab. And that is something too precious to be tampered with. All right. Vinayak, the last word. First and the last. My only submission is that I did a survey. I tell you honestly. So I asked around like 250, 300 people that who was the first Punjabi Prime Minister of this country. You will not believe me, 98% of them said Manmohan Singh. But factually it was Mr. Inder Kumar Gujral. He was forgotten. Who was the first acting Punjabi Prime Minister was Gulzari Lal Nanda. He was also conveniently forgotten. Mr. Gujral tried to waive off a debt which now has amounted to 5 lakhs crore. By that time, it was around 8,000 crore. He had a short tenure that could not materialize, but he tried to waive off that debt, being a Punjabi. But that was not remembered. The point here is, whatever a community tries to do, the so-called intelligentsia is not ready to accept that they also did something for Punjab. And my struggle through this book is only to get them that recognition. As Sidhu sir just said, that agitation, farmers' agitation, the entire Punjab came to fought that, right? But now when that is being dissected, what are we getting? We are getting the leftists, we are getting the Panthak affiliated farmer unions, and again we are getting to that project, to that policy making or to that method of resistance which suits a particular community. The point here is that we are falling into that deep trap because we are not trying to, I would say we are not trying to stay truthful. आम आदमी पार्टी का प्रोजेक्ट सिंपली इसलिए फेल हो रहा है पंजाब में बिकॉज आम आदमी पार्टी डजंट नो पंजाब, बिकॉज आवर हिस्ट्री बुक्स हैव नॉट बीन that honest that they present a true picture of Punjab. They have been trying to make everyone happy to, but if you see the destruction of the institutions in Punjab, that happened, and that happened by a design. And who designed that? Those people who were there at the power. They wanted everything to be rewritten that should suit their narrative. I'm just trying to undo that. I'm not trying to, मैं किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज है, मुझे ऐसा लगता है एक सच है जो बोला जाना चाहिए. That's it. Thank you. All right. Thank you very much to all of you for joining us. Thank you.